YouTube channel C5 Okay, today we will discuss stoichiometry. Stoichiometry, the term is little bit sounding very heavy, no? And थोड़ा डर लग रहा है stoichiometry term. ठीक है. So what is stoichiometry? we'll देखते हैं. Stoichiometry. Simply we can say this is the maths of chemistry. मतलब chemistry का ये maths है. Okay. We will learn it within 5 minutes, I'm telling. Okay, and rest of the time we will spend for practice. सिर्फ 5 मिनट में सीखेंगे स्टोइशियोमेट्री क्या है. ठीक है, देखते हैं. केमिस्ट्री मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं. सिंपल. सपोज water is prepared from hydrogen and oxygen. If you burn hydrogen in presence of oxygen, then water will be formed. So H2O2 H2O. Okay. Now can you tell me what is the mistake in this reaction or what is the wrong in this equation? क्या गलती क्या है यहाँ पर? This is not a balanced equation. Okay, we have to balance. Balance मतलब क्या? Number of atoms match नहीं कर रहे. In the left hand side 2 atoms are there of oxygen. In the right hand side 1. तो इसको balance कर लेते हैं. 2 से multiply कर देते हैं. Now if it is balanced, the oxygen is balanced. Again hydrogen is not balanced. Okay, 4 hydrogens are there. Here 2 hydrogen. So इसको भी multiply कर देते हैं. Okay, now it's a balanced equation. Okay, अब देखो. Theoretically, 2 molecules of hydrogen are reacting with 1 molecule of oxygen to give 2 molecules of water. Theoretically, but practically ये possible है? एक molecule लेके 2 molecule react करके 3 molecule बने. It is not possible practically, no, to see. So we consider this as the number of moles. Okay, and whatever be it is, number of moles or number of molecules, the ratio of this. The ratio of the amount of this reactants and product is the stoichiometry. ठीक है, मतलब यहां पर 2 molecules reacting with 1 molecule to give 2 molecules. ठीक है, यही है stoichiometry. But we already learned that it is not possible. We have come to know that it is impossible to take 1 or 2 molecules. तो इसको larger quantity में लेते हैं ताकि practically हम लोग इसको implement कर सकते हैं. 2 moles. 1 mole मतलब क्या है? 6.022 into 10 to the power 23. It's a huge quantity, huge number of molecules. इसका mass जो होगा sufficient होगा, we will be able to see and understand. Okay, so let us consider moles. But the result will be same. 2 moles reacting with 1 mole to give 2 moles. ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हुआ? 2:1:2. दिस इज द स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, हो गया स्टोइशियोमेट्री. विदिन 1-2 मिनट्स वी हैव लर्नड. ओके, नाउ अब इसके इंप्लीमेंटेशन देखते हैं. तो व्हाई वी आर लर्निंग स्टोइशियोमेट्री. ठीक है, देखते हैं. अब ठीक है, इक्वेशन सेम ही ले लेते हैं. 2 molecules of water दे रहे. ठीक है, सेम इक्वेशन लिए. इफ यू आर आस्क्ड नाउ, अगर तुमको पूछा जाए कि तुम्हारे पास 20 moles of तुमको ऑक्सीजन दिया गया टू प्रिपेयर वाटर. हाउ मच वाटर यू वांट? ओके, सिंस द रेशियो इज 2:1:2. इसका मतलब क्या? अगर यहाँ पर 2 moles लिया तो 2 moles वाटर प्रिपेयर होगा. Now, if it is asked to you that 20 moles of water, you have got 20 moles of water. Okay, then after 20 moles of hydrogen, not water. So after burning this hydrogen, how much water will be found? How many moles of water you will get? Okay, now see the relation. If we take here 2 moles, then we will get here 2 moles. ठीक है, ये रिलेशन है. अगर यहाँ पर 2 moles लिया तो यहाँ पर भी 2 moles बनेगा. ठीक है, तो यहां पर 20 moles लिया मतलब यहां पर भी 20 moles मिलेगा. हो गया. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली. हाउ मच ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड? तो देखो, सिंपली देखो, जितना हाइड्रोजन लग रहा है हाफ ऑफ दैट ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड. सो 20 moles अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो 10 moles ऑफ ऑक्सीजन लगेगा. ठीक है, ओके. अब यहां पर एक क्वेश्चन. सपोज इट इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स. थोड़ा और इसमें कैलकुलेशन ऐड कर देते हैं. ठीक है, अगर तुमको दिया गया कि तुमको 10 grams of
hydrogen is given to you. 10 grams mass. It is not mole. It is not a number of molecules. The mass is given. Okay, 10 grams of hydrogen you have got. Now how much water you will be able to prepare and how much oxygen will be required. Okay, so 10 ग्राम मतलब यहाँ पर half 2 moles अगर हाइड्रोजन ले रहे थे तो 1 mole of oxygen was required. Okay, so half of that was required. लेकिन यहाँ पर we can't make it half directly because 10 gram of hydrogen does not mean that it will react with 5 gram of oxygen because number of mole is directly related to number of molecules. Okay, whichever is the substance doesn't matter. But अगर मास हुआ यहाँ पर ये मास डायरेक्टली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं जाएगा बिकॉज द मास इज वेरिंग द एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास सबका अलग अलग होता है इसलिए 10 ग्राम हाइड्रोजन में जितना मॉलिक्यूल होगा 10 ग्राम ऑक्सीजन में उतना मॉलिक्यूल नहीं होगा अंडरस्टूड मीन्स 10 ग्राम हाइड्रोजन हाउ मच मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सेम नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल नॉट बी देयर इन 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओके तो इसको क्या करेंगे अभी इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे ठीक है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स हाउ मच हाइड्रोजन मास को हम लोग अगर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे इफ यू डिवाइड द मास बाय मॉलिक्यूलर वेट देन वी विल गेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है तो 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स वी विल गेट सो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इट मीन्स 5 moles of hydrogen. So if we have taken 10 grams of hydrogen, it means we have taken 5 moles of oxygen. Okay. Now 5 moles of hydrogen will be reacting with अगर 2 moles for 2 moles of hydrogen 1 mole of oxygen is required. Okay. Then hydrogen अगर हम लोग ने 5 moles लिया तो इसका हाफ होगा 2.5 ये इसका हाफ है ठीक है हाफ ऑफ दिस मीन्स हाउ मच हाइड्रोजन यू हैव टेकन हाफ ऑफ दैट नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड सो इफ यू हैव टेकन 5 moles of hydrogen it means you need 2.5 moles of oxygen so 2.5 moles of oxygen will be required 2.5 moles of oxygen will be required okay now the question is you are asked to find the mass of the oxygen will be reacting with 10 gram of hydrogen. So 2.5 moles of oxygen मतलब इसका मास क्या होगा अगर हम लोग मास से अगर नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं ओके इफ वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द मास देन वी आर डिवाइडिंग द मास बाय मॉलिक्यूलर वेट टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स okay now here number of moles is given so to find the number of to find the mass what we have to do simply we have to multiply the mass by the molecular weight okay so this is equal to 2.5 into what is the molecular weight of oxygen atomic weight if is 16 then molecular weight will be 32 ठीक है इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा 35 32 64 plus 16 so it will be 7 10 80 so 80 gram of oxygen will be reacting with 10 gram of hydrogen clear ठीक है another example basically we have learned what is stoichiometry and how the calculation is done what is the relation but practice के लिए थोड़ा न्यूमेरिकल वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स सीखना पड़ेगा एक ऑर्गेनिक रिएक्शन लेते हैं सपोज मीथेन is burning in presence of oxygen then remember whenever a hydrocarbon will be burnt in presence of oxygen sufficient oxygen then the products will be carbon dioxide and water no other elements are there so carbon will be converted into carbon dioxide and oxygen will be converted hydrogen will be converted into water ठीक है अब इसको बैलेंस करते हैं if the equation is not balanced then we can't calculate okay now see number of hydrogen 4 hydrogens are here 2 hydrogen so let us multiply this by 2 then 2 oxygen and 2 oxygen 4 oxygens so here 2 let us multiply it by 2 again
then we will get a balanced equation, right? Now let us find the ratio, the stoichiometry of the equation. So again we will not consider molecule, we will consider mole. So 1 mole of methane is reacting with 2 moles of oxygen, okay, to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सब, ओके। अभी now suppose any quantity is given, suppose 8 gram of oxygen you have. Suppose in the question it is asked that you have got 8 grams of oxygen and sufficient quantity of methane. Okay, then how much methane will be burnt with the help of 8 gram of oxygen? Okay, and how much carbon dioxide and how much water vapor will be formed? Okay, now see, 8 gram of oxygen you have taken, but directly we can't deal with the mass. Okay, we have to convert it into moles. So 8 gram of O2 means how many moles of O2? 8 divided by, what is the molecular weight of oxygen? 32. Okay, this much moles of O2. ठीक है, now 1 by 4 moles of O2, or we can write 0.25 moles of O2. Done. Okay, now 2 moles of oxygen is reacting with 1 mole of methane, means how much moles of oxygen we are taking, half of that methane will be burnt. Okay, so if 0.25 moles of oxygen we have got, then the quantity of the methane, then the number of moles of methane required will be equal to half of this. So 0.25 divided by 2 is equal to 0.125, this much moles. Okay, now what is the molecular weight of methane? The molecular weight of methane, let us calculate. 12 plus 4, 12 plus 4, 16. Okay, so this is the number of moles and this is the molecular weight. Therefore, the mass of the methane required will be equal to, so multiply it simply, 16 into 0.125, this much moles. Done. So these are the numericals which in this type of numericals will come in your exam. Okay, so don't get nervous. For any doubt or suppose for any particular equation you need a discussion, then write it in the comment section. So thank you everyone. Stoichiometry is today up to this. For further any doubt, please write in comment section or go to the web page Chemistry in 5 minutes, and there is a Google form. You can put your question there with other details. Okay, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.